Good morning all, my name is Minakshi from B.Ed Special Education batch. Today we are going to learn something interesting. Topic is domains of the earth. Domains of the earth क्या होता है? ये एक मेन पार्ट होता है अर्थ का, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? लैंड, वाटर, जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और जहाँ पे क्या होती है लाइफ एग्जिस्ट करती है. सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स वॉच अ वीडियो. Hi everyone, welcome back to Minakshi TV. Today we shall be learning about the four domains of Earth. There are four domains of Earth: the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, and the biosphere. Let's learn about all of them one by one. Lithosphere, or the domain of land. Lithosphere is formed by all ocean plants on Earth. The land on Earth consists of various landforms like mountains, deserts, cliff, delta, plateau, beach, and caves. And all land on Earth is divided into 7 main continents: Asia being the largest, while Australia being the smallest. All these land masses are separated by large water bodies called oceans. Now if we take a small cross-section of Earth, we would find that our Earth has many layers inside it. These layers are mainly the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The upper crust and mantle mainly form the lithosphere, the domain of land on Earth. Moving on to the Earth's next domain, the hydrosphere, or the domain of water. All water on Earth is a part of hydrosphere. Various water bodies like oceans, seas, rivers, ponds, straits, swamps, and springs make up the hydrosphere. All water on Earth undergoes a continuous cycle known as the water cycle. The water cycle is also an important part of hydrosphere, the domain of water on Earth. Moving on to the third domain of Earth, which is the atmosphere. The atmosphere is the domain of air on Earth. The air around us and our planet is called atmosphere. The atmosphere on Earth is made up of several gases. The atmosphere of the Earth is made up of about 78% nitrogen gas, 21% of oxygen gas that all the living beings breathe, and 1% of other gases like carbon dioxide and mostly the air. The atmosphere also has several layers. Layers are namely the troposphere, which is the lowest layer which starts from the ground level and extends up to 10 kilometers. We humans live in this layer. Next comes the stratosphere. The ozone layer is found within the stratosphere, and it absorbs high-energy ultraviolet light from the sun. Next comes the mesosphere. Most of the meteors burn up in the mesosphere. Then we have the thermosphere. High-energy X-rays and UV radiation from the sun are absorbed in the thermosphere. Lastly, we have the exosphere, which is the outermost layer of atmosphere. The fourth and the most important and unique domain, that is the biosphere. The biosphere is the domain of life on Earth. The biosphere is the zone where the lithosphere, the hydrosphere, and the atmosphere interact. Our Earth is a unique planet that can support life due to the presence of hydrosphere, atmosphere, and lithosphere.
lithosphere. All forms of life exist in the zone which is called the biosphere. So, all the living organisms like animals, humans, birds, vegetation, animals in the ground, dead plants and animals, sea creatures, and all the marine plants and animals make up the biosphere. So, the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere are all closely connected with each other, and because of this, when they interact, the biosphere is dependent upon the three of them. So, as you all saw in the video, let's read in detail. There are four main domains of the Earth. First is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. So, इनका थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है? जो भी हमारा लैंड होता है, जो भी हार्ड पार्ट है इसका, अर्थ का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर. जो कि समझते हैं अर्थ के इंटीरियर. तो ये हमारा अर्थ है. ओके, यहाँ इसमें क्या होता है? अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स होती है. जो पहली होती है, जो सबसे थर्ड लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? हमारी कोर. द सेकेंड लेयर इज मेंटल एंड द फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट. तो जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, वो जो ये जो अपर लेयर होती है इसकी क्रस्ट की, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. और इसमें क्या होता है? ये 3 लेयर होती है इसकी सॉइल की, और माउंटेन्स और जो भी रॉक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसकी. इसमें क्या क्या आते हैं लैंड फॉर्म्स में? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एंड डेजर्ट्स. फिर ये 29% हमारा अर्थ का सरफेस को क्या करता है? कवर करता है, लिथोस्फीयर. और इसके क्या है? 2 मेन डिवीजन है. फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड वन इज ओशियन बेसिन्स. कॉन्टिनेंट्स जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड ओशियन बेसिन हो गया जो भी हमारे ओशियन है उसके जो नीचे की जो लैंड है वो हमारा कौन कवर करता है? लिथोस्फीयर. एंड नेक्स्ट वन इज एटमोस्फियर. एटमोस्फियर क्या होता है? लाइक ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर मैंने अपना हाथ कवर कर दिया है. तो एक हमारे अर्थ के ऊपर क्या होती है? गैसेस की लेयर होती है, और बहुत सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल से एक ब्लैंकेट बना होता है जो कि क्या करता है? अर्थ को कवर करके रखता है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमोस्फियर. एटमोस्फियर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से क्या करते हैं? इसको वो कवर करके रखते हैं. ठीक है. फिर आता है कंपोजिशन. इसमें नाइट्रोजन कितना रहता है? 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक CO2, आर्गन और मीथेन वगैरह सब कितना रहता है? 1%. देन नेक्स्ट इज कौन सी लेयर्स हमारे एटमोस्फियर में होती है. तो फर्स्ट लेयर जो हमारे एटमोस्फियर में होती है वो कौन सी होती है? हमारी ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जहाँ पे हमारा वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? अकल होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट, जो क्लोजेस्ट है बिल्कुल, वो कौन है? ट्रोपोस्फियर. देन आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. और इसकी हाइट अराउंड कितनी होती है? 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है. ओके. एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं लाइक ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर्स, ये कितना कवर करके रखते हैं? 71% ऑफ अर्थ सरफेस को ये कवर करके रखते हैं. और हाइड्रोस्फीयर में क्या है? जितना भी हमारा वाटर है हमारी अर्थ में, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. और ओशियन जो 97% जो स्लाइम वाटर है, जो कि सॉल्टी वाटर है, कितना 97% है. और कहाँ पे? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक.
बाकी के ओशंस में। और फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 3% है, जो कि किस किस में, रिवर में, लेक्स में एंड आइस। देन जो ये जो वाटर साइकिल होती है वो क्या करती है, हमारी मेंटेन करके रखती है इसको, लैंड, एयर, वाटर को। देन नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये हमारा इम्पोर्टेंट डोमेन होता है, क्योंकि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इसका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर का। यहाँ पे ये क्या होता है, जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पे क्या होती है, लाइफ पॉसिबल होती है। इसमें क्या क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ओशन, जितना भी सब चीज़ें होती हैं सारी किसमें अकर करती हैं, बायोस्फीयर में। और लाइफ पॉसिबल भी सिर्फ बायोस्फीयर में होती है। और ये एक्सटेंड कितना करती है, 10 किलोमीटर अबव एंड 10 किलोमीटर बिलो। जैसे कि सी लेवल में, सी लेवल पर जाते हैं तो 10 किलोमीटर ये डेप्थ में जाएगी, और अपर जब एटमोस्फेयर की तरफ जाते हैं तब ये 10 किलोमीटर अपर साइड में जाएगी। तो चलो इसको TLM में थ्रू समझते हैं। सो डोमेन्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट हमारा क्या था, लिथोस्फीयर, जो कि क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे माउंटेन, प्लेट्यू, जो भी लैंड होती है, जो भी चीज़ें उस पर आती है, वो सारा क्या होता है, हमारा लिथोस्फीयर। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जितने भी वाटर बॉडीज वगैरह सब किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। फिर नेक्स्ट इज एटमोस्फीयर, जो भी हमारा ये वेदर, क्लाइमेट वगैरह अगर जहाँ करता है वो कौन सा होता है, एटमोस्फीयर होता है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे क्या होती है, लाइफ पॉसिबल होती है। सो नाउ टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। सो व्हाट आर द 4 मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ? फर्स्ट वन इज एटमोस्फीयर, lithosphere, biosphere and hydrosphere. And which domain life is possible? The answer is biosphere. Thank you and have a nice day.